सो हमारे बाबर आजम हमारे दरमियान मौजूद हैं, दैट इज मुदस्सिर असलम। सो मुदस्सिर असलम, आपका सेगमेंट शुरू हुआ चाहता है, गो अहेड मैन। थैंक यू अहमद भाई, आपने इतनी डिटेल में वर्ल्ड कप को रैंक किया है। आई विल आस्क अबाउट योर, obviously you started your journey with Rehan, Haq and Hassan Cheema. Now they are Rehan as appointed as team manager, Hassan Cheema in selection committee. So आप इसको appointments को के मतलब किस तरह लेते हैं कि how you see this appointment? Is this a move, PCB moving towards data analyst या just for the sake of optics? आप इसको किस तरह देखते हैं? इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ कीजिएगा। क्या आई थिंक मेरे लिए इस पे कोई भी एनालिसिस करना थोड़ा बहुत नामुमकिन भी है एंड इट वुड आल्सो बी डिसऑनेस्ट बिकॉज ऑब्वियसली ये आप मेरे दो अच्छे करीबी दोस्तों के बारे में बात कर रहे हो एंड आई थिंक इट्स बीन रियली अमेजिंग एंड आई फील रियली लकी कि इनका सफ़र और इनके साथ शुएब नवीद, इमरान अहमद खान, इनका सफ़र देखते हुए इट्स इनक्रेडिबल क्योंकि हम सारे एक साथ एक वक्त पे वर जस्ट रैंडम लॉन्डे टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड all of these guys in particular I think I was मेरे देखें ये एक बात है कि मैंने ना क्रिकेट पे पहले भी इस पे बारे में बात की कि मुझे अल्लाह मियाँ ने एब्सोल्युटली ज़ीरो टैलेंट दिया है किसी भी स्पोर्ट्स खेलने का। मतलब मैं अगर बुक क्रिकेट खेलते भी इंजर हो सकता हूँ। तो मैं जब क्रिकेट में मेरी दिलचस्पी की वजह यही थी कि आपको ना जब आप खास तौर पर व्हेन यू यंग एंड you're a boy, जेंडर आपको पता है कि एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, आपको सोसाइटी बताती है कि मर्द ये करते हैं, औरतें ये करती हैं, और वन ऑफ द थिंग्स दैट मर्द डू आर लाइक ओके दे कैन रन फास्ट, यू नो वो खेलते अच्छा है ये वो। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं कर सकते तो चले आप मैच देख तो रहे। तो लिटरली मेरी क्रिकेट एक यही थी कि यार मतलब मैं भी मतलब बॉयज में इन हो सकूं। And I think all of these guys, particularly Rehan, was a very accomplished athlete before he got injuries. But all of these guys all came in, well, ये भी काफी नर्डीज थे, but तब भी इनको थोड़ा बहुत इस तरीके से ज़्यादा I think interest वैसे भी था. And I think for me always the most interesting thing about cricket was like the socio-cultural aspect of it. And what I liked with these guys was कि all of us हम खपती थे क्रिकेट के बारे में, और उस लेवल पे जो एक दूसरे से आप बात कर रहे होते हैं और जो भी टॉपिक्स पे होते हैं, एंड देन जब तक ये कि अच्छा क्रिकेट इन्फो पे छप गए या जो कुछ भी, वो भी एक बहुत बड़ा कदम था, बट लाइक दैट वाज स्टिल मेड मोर सेंस। बट ये लोग फिर जब आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस एक्चुअली, जब अहमद ने मुझे डीएम किया था कि इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो आप लोग बताओ कि इट जस्ट इवन हमने पीटीवी का शो किया और दैट वाज रियली अमेजिंग कि उसके बाद जब ये लोग ने आई थिंक उसका नेशनल T20 पे ये दोनों गए थे, तो ऑल सारे खिलाड़ी वगैरह हमें जानते थे और ये वो, और आई थिंक अराउंड दैट टाइम बेसिकली मैंने पटारी में काम करना शुरू कर दिया था, सो माय मेन फोकस वाज देयर। और with these guys who were doing cricket stuff and whatever, so it just still felt like a bit of a एक रैंडम चीज इसलिए लग रही थी क्योंकि अच्छा आपने वो शो किया, उसके बाद फिर ऐसा नहीं था कि आपके पास ऑफर ही ऑफर है या कोई नई चीज शुरू हो रही है, लाइक मौका मिला फिर चला गया, कुछ और हुआ नहीं हुआ, ये इस तरीके की चीजें चल रही थी। And then when PSL starts happening, Shoaib was working at the PCT and franchise owners were asking him about like okay हमें लोग हायर करने हैं, आप किसे जानते हैं वो, and around that time he mentioned Rehan and Hassan, and so ये दोनों obviously लिख रहे थे, और हमारी वही मैं आपसे कह रहा था कि at this point now we're friends, especially when we were doing World Cup, we were obviously like together every day for 12 hours, and then after that we were online वगैरह भी आप बातचीत रहती थी, and we would be hanging out and we were discussing these kinds of things कि भाई क्रिकेट जैसे कि मैं बता रहा था कि कैसे tactics क्या होने चाहिए, किस क्या, which is I guess any group of people who are really into cricket यही सब बातें कर रहे होते हैं। मगर भी फर्क ये हुआ कि पहली PSL में तो मैं I was
heading the digital for the PSL, and Hassan and Rehan were working in Islamabad United. Imran and Shoaib were working in the PSL. और पहला मैच था, और मैं क्या कहते हैं, दुबई के जो स्टेडियम है उसमें जो ब्रॉडकास्ट के नीचे जो सेटअप है, नॉट वेयर द कमेंटेटर्स एंड एवरीथिंग आर, बट वेयर द डायरेक्टर्स आर, वो लाइक इट्स अ बिट slightly like lower to the stadium. You can't see anything outside, right? Like वो स्टेडियम के अंदर की तरफ है. And I was sitting there क्योंकि वो वहीं से हमें clips जो मिल रही थी हम उनको upload कर देते हैं and stuff like that. And Islamabad lost that match और कुत्तों की तरह हार रहा था. और मैं एक थोड़ी देर की ब्रेक के लिए मैं बाउंड्री रोड तक गया और मुझे ना दूर हसन रेहान नजर आते, मैंने तस्वीर खींची एंड लाइक आई जस्ट लाइक आई पुट लाफिंग इमोजी और समथिंग ऑन इट और मैंने ट्विटर पे डाल दी. और अगेन लाइक आपके दो दोस्त है कुछ कर रहे हैं और उनकी फट रही है, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं. दैट्स हाउ इज लुकिंग एट इट. Even as I'm telling the story now, and I realized when like a couple of hours later I checked my phone again क्योंकि उस वक्त भी I was logged into PSL account, तो मैं अपना notifications ही देख रहा था. जब मैंने अपने देखे ना, I realized like holy shit dude, like ये एक national event है, like like now yes they're still my friends, but ये जो मैं इनकी मेरे लिए it was the same as मैं WhatsApp पे इनकी बजा रहा हूँ, मैं Twitter पे इनकी बजा रहा हूँ, but they were so much, this was such a big deal. And I think in that moment, like that was the first time it kind of really hit me. And then obviously they go on to win that PSL in another crazy, come from behind Pakistan type of situation. And I think in that was really amazing. Like I think कि उस World Cup में एक दिन हम लोग किसी World Cup नहीं, PSL में हम लोग मैच खत्म हुआ थे, ऑफ देता है क्या, और एक कोई PCB का कोई सोशल इवेंट था और हम लोग एक टेबल बैठे हुए थे, एंड देन आई वाज एक्चुअली आस्किंग देम to explain Guardiola's tactics to me. और वो लोग एक टेबल के ऊपर napkins और salt shakers से मुझे समझा रहे हैं. And these guys are obviously good enough to be leading a team, or be part of a team. And I think that after that became really crazy. Like, I think अब sadly, जैसे कि do any of you have a job, like, or had a job? Yes. कहाँ काम करते हो? मैं करता तो रिमोट जॉब ही हूँ. लाइक आई वर्क एज अ कॉपी राइटर एट दिस कंपनी. मैं फ्रीलांसर हूँ अहमर भाई, बस फ्रीलांसिंग करते हैं. Yes, मतलब मेरा फ्रीलांस भी I guess it also counts, but आपका दोस्त अभी बैंक में काम करता है और उसका बॉस है असलम, और असलम बड़ा ओल्ड स्कूल है और शाहजेब जो है वो नया बंदा लाए हैं, whatever, right? And your friend is telling you these things and he's like, man, Aslam's such a dickhead and Shahzeeb's really nice or whatever. So in a weird way, like that's what my friends are telling me, except they're talking about chairmen and captains and selectors and board officials, and sadly in a lot of ways also I think कि मतलब उस लम्हे से, like around PSL 1-2, like I think that kind of ability to be a fan, getting away and away from it. And one of the main reasons वही कि आपके दोस्त वगैरह भी ये decisions ले रहे हैं. पहली PSL में मिर्जा क्या नाम है उनका, मिर्जा नहीं यार, वो जो जर्नलिस्ट हैं, मिर्जा इकबाल बेग और हसन चीमा का फटा हुआ था और क्या कहते हैं वॉकआउट किया गया था सहाफियों का और बहुत लाइक ड्रामे हुए थे. एंड अगेन इट जस्ट फेल्ट लाइक कि चीमा का काइंड ऑफ किसी रैंडम बंदे से बीमारी हुई, एक्सेप्ट अगली सुबह को वो जंग की हेडलाइन नहीं थी, बट इट वाज लाइक पीस एंड तो वो एक बड़ा अजीब सा सीन हो गया था. एंड आई थिंक कि मैं उस वर्ल्ड में हमेशा एक गेस्ट की तरह रहता था. So like all the time, like I would work in a PSL, for a few weeks at a time, something like that, and back and forth. And obviously because I was also had Patari going on, और ये लोग उसमें और ज़्यादा involved होते जा रहे थे. And I think so in that way, even now, like जैसे आपका जो सवाल है कि क्या ये PCB की तरफ से डेटा है ऑप्टिक्स, I don't really know PCB.
को मैं उस तरीके से अब मैं देखता नहीं हूँ, मतलब maybe it'll take me some time to kind of step aside and view it that way, because I'm just viewing it through my friends, right? And that's what my interest in it becomes. What I would say is कि with somebody what these guys are doing is कि तमाम दुनिया भर में स्पोर्ट्स में एक तरीके एक तरफ स्पोर्ट्स आर गोइंग, और क्रिकेट एक बहुत अजीब स्पोर्ट है, क्योंकि जो आपकी बाकी दुनिया में मकबूल स्पोर्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बनी हैं, वो बनी है मतलब 2, 1.5, 2, 3 घंटे की होती हैं। क्रिकेट इज लाइक सबसे ज़्यादा मॉडर्न होके भी 200 साल के बाद वो एक 4 घंटे का मैच है, 5 घंटे का मैच है, और द शॉर्टेस्ट वन। सो इन लॉट ऑफ वेज क्रिकेट रियली एग्जिस्ट outside the time it lives in, and so उस तरीके में मतलब क्रिकेट में भी ये हो रहा है और स्पोर्ट्स में भी हो रहा है, तो आहिस्ता है अभी भी क्रिकेट में so there's so many ways that is still far behind, so but I think कि ये बड़ा जरूरी है for the sport, so not just for Pakistan team, I think for the sport as well, but what also is that these guys are bringing something different in terms of the approach as well, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा सिर्फ दिमाग से भी ये है, but at Islamabad they've also shown कि ये बहुत एक strong cohesive team बना सकते हैं, उसका कोच बना सकता है और उसको लेके चल सकते हैं, and again there are mistakes in there as well, जो as a friend I don't want to think about or point out or whatever, but obviously और लोग उस पर तनकीद कर सकते हैं, मगर आई फील कि दिमाग से तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उसके साथ साथ like the way of treating cricketers differently, and I think उसकी मैं जो भी अगर मिसालें दूंगा ना, I can only tell you anonymous ने एक बोर्ड ऑफिशियल ने ये कहा या वो कहा, बट आई थिंक उसका अगर मैं एक जुमले में उसको समझाने की कोशिश करूँ ना कि क्रिकेट में और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है, यू सी दीज लाइक ब्रोकन ओल्ड मैन and they're trying to break the spirits of young men coming into the sport, and like I've not been involved directly in the women's game so much, and usme it is a bit different, but the women's game is so much kind of, there's still male administrators and officials and they're still behaving the same way with them as well. So the energy for both these teams, both the men's and women's teams, there's a lot of like really young people, बहुत छोटे शहरों से आए होते हैं, उनके बहुत young होते हैं, उनकी life experiences इतने नहीं होते हैं, and then there's just a lot of toxicity that they're dealing with constantly, and it just I think कि मुझे मतलब Hayat doesn't even capture it. Okay, what I think athletes, the more and more I've worked as a journalist, like it astounds me कि वो किस क्या क्लब से गुजरते हैं और उनके ऊपर क्या crazy तवक्कुआत होती हैं. But I think again, like Pakistan cricket में जो ये सारे खिलाड़ी हैं, even the most kind of mediocre ones जिनका मजाक उड़ाते हैं, जो भी इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें जितनी मुश्किलात और जितनी टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ती है, आई थिंक हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता है, एंड आई थिंक दैट विद what I was like Cheema has always been really incredible with his use of data. It's really good to see him in the selection team. I think Rehan is just really brilliant with people amongst other talents, and I think that अगर आप लोग ने एक वीडियो देखी होगी कि उसने they did this thing where सबके लॉकर पे तस्वीर लगी थी of like their happiest moments, like Rehan has been talking about like the Pakistan way as a way of doing things. I think कि वो obviously जिस तरीके से मैं क्रिकेट को देखता हूँ, उसके बारे में लिखता हूँ, मुझे वैसे भी पसंद होना था, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मुझे वैसे भी पसंद होना था, पर उसके बावजूद भी I think that's a really great energy to bring into the Pakistan dressing room. That is really great, Ahmer bhai. Thanks for sharing a lot of details of your even friendship memories. So next हमारा segment है just like Kasauti is the quiz. आपको एक player guess करना होगा. अहमद, अगर आप slide show कर दें तो. Yeah, it would be on in a few seconds, I guess. Yeah. Mudassir, is it on the screen? Yeah. Yes. अहमद भाई, it's just like हमने एक प्लेयर को अपने माइंड में वो थॉट किया है, आपने प्लेयर की पर्सनैलिटी, प्लेयर को गेस करना है, और आप 12 क्वेश्चन
पूछ सकते हैं. It will be like close-ended questions. In answer will be yes or no. So you can start asking questions. Okay. किसी गोरी टीम से? Yes. Okay. Southern Hemisphere? गोरी लिखो ब्रो, वाइट नहीं है. ओके ओके Okay, white गोरे कर दे. आपने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा अहमद भाई? Southern Hemisphere, Northern Hemisphere. मतलब Southern Hemisphere से yes no मैं अगर आप बता. Yes. ठीक है. Retired? Retired, yes. Okay. Does he have a twin brother? No. Is he a bowler? Equally. Equal. तो ऑलराउंडर कह सकते हैं. ऑलराउंडर है भाई. All-rounder. Oh, उसको वो is he knighted? Sir है वो. What? उसको No. knighthood मिली हुई है. नहीं. No. Equal batter bowler. Retired. Okay. Is he from New Zealand? No. He's Australian or South African. An equal batter bowler, so all rounder. 5 क्वेश्चन रह गए अमर भाई वैसे फॉर्मेट के मुताबिक. We are expecting अहमद भाई आपसे like within 5 to 6 questions. ठीक है. मैं आप क्या कहते हैं, ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको फ्रेज कैसे करूं. क्या इसके बारे में अमर भाई इसकी सेक्सुअलिटी के बारे में रूमर था, बट तुम लोग बहुत छोटे हो, तुम लोग को पता नहीं होगा ये. No. I get it. No. I get it. No, Ahmer bhai. Its answer is no. स्पिरिचुअलिटी बोला अमर भाई. सॉरी आई couldn't hear. I get it, Ahmed. I get it. Okay. We need an all-rounder from Australia or South Africa who is retired. Amar bhai, just to cut you off, sorry. Mudassir, also sorry to you. I think you should kind of go through the last 2 or 3 rules as well. You might be missing some clue as well, yeah. Just to. मैं well-known personality है और cricketer है, right? Yeah. Can be dead, alive, retired, non-retired. Yeah. नहीं, I mean I feel कि क्योंकि all-rounder, equally good all-rounder तो बहुत कम होते हैं क्रिकेट में. तो क्या कहते हैं, मैंने जैक कैलिस इसलिए मेरे दिमाग में था, मुदस्सिर ने वो रूल आउट कर दिया है. रिचर्ड हैडली मेरे दिमाग में था, वो रूल आउट हो गया है क्योंकि नाइटेड नहीं है. And so I'm just trying to think like who is the greatest Australian all-rounder. और हाल ही में तो I wouldn't say कि कोई बहुत अच्छा all-rounder खेला है ऑस्ट्रेलिया के लिए. Maybe इसने PSL खेली? No. That takes out Shane Watson. Wow, okay. इसने वर्ल्ड कप जीता है? Yes. तो साउथ अफ्रीकन नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलियन. सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप अहमद भैया.
सही डायरेक्शन में तो बहुत अरसे से हूँ मैं तो एक एक करके अपनी आई मीन क्लोज जा रहे हैं। मुझे यकीन पड़ रहा है कि जब ये खत्म होगा ना तो मैं कहूंगा कि तुम लोग ने सही नहीं किया है। Let me think. Okay, what else? What else? What else? Who else has been a big Australian all-rounder? उम्मीद है धांधली नहीं होगी इस मैच में। अहमद भाई टेंशन ना ले, धांधली नहीं है इस मैच में। सही है अगर आप कहते हैं। I guess अगर पिछले 4-5 साल से कोई है तो I'm not even thinking like that. But he's retired, I think, right? Can we go to the Yes. answers? Yeah, yeah. Can you switch the screen to the answer wala part? I just remember what I'm looking at. Uh, Ahmed bhai, screen is on for answers. Yeah. अच्छा मुझे सिर्फ वो रूल्स दिख रहे हैं। ओके खैर Huh? अहमद जूम आउट कर दो यार, सॉरी टू इंटरप्ट अहमद भाई आपको। Zoom he's out. won a World Cup, an Okay, let me check. Australian all-rounder. Who Bevan? Who else has won? PSL तुम लोगों ने कहा नहीं खेली है। यस, Not पीएसएल नहीं खेला। Did he play in the 90s? Yes, Yes. yes. He debuted in 90s. He debuted in हिंट आपके लिए। all-rounder who debuted in the 90s. This is मेरे कितना आखिरी सवाल है ये यार। Yeah. I'm really I'm at a loss. Did he have dreadlocks? Yes. Andrew Simons. Yeah, you got it. But in the last question. But yes. Okay. Clapping. Yeah, आपने डिसपॉइंट नहीं किया है अमर भाई, आपने डिसपॉइंट नहीं किया बिल्कुल भी। I mean, yeah, मुझे यही था कि मुझे सवालात से टेंशन नहीं थी। I wanted to eliminate every ऑप्शन, क्योंकि इतने एक दफा जब ये हो गया था कि ऑलराउंडर है, आई थिंक दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस इट, बिकॉज़ फिर ओके यू नो कि वॉर्न नहीं है, आप पता है वॉर्न नहीं है, blah सो आई थिंक आई वुड हैव मे बी बीन अ बिट मोर एफिशिएंट कि 2-3 और सवाल मैंने मुफ्त में किए जो पहले पहुंच सकता था यार, बट व्हाटएवर, यू नो लास्ट बॉल तक एंजॉय किया मैंने। Okay, thank you so much. Over to you, Ahmed. Yeah, pure Pakistani ride that was during the quiz segment. So yeah, audience, that is all for the today mega episode with wonderful guest. Wonderful listening experience for me. So many memories, so many insights, so many things again to listen. Again, I pretty much enjoyed every bit of it. So again, with formal thanks, एम्मा भाई का तहे दिल से शुक्रिया। ऑडियंस आपको भी शुक्रिया, आप लंबे अरसे के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, शेयर्स हमारा हौसला बढ़ाएंगे, ताकि हम मज़ीद अच्छा कंटेंट, मज़ीद नए गेस्ट और मज़ीद नई अच्छी आउटलुक के साथ आपको प्रेजेंट कर सकें इन द डेज टू कम। सो या हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, आपको हमारे नए कंटेंट का इंतज़ार रहेगा। So we won't disappoint you, and I expect same from all of the you guys watching us out on YouTube. So Emma bhai, any parting thoughts? And again, I must not forget, he with respected Usman Samyuddin have started their new podcast, Butterfast. So our viewers do give them huge watch. We will make sure and the channel link of their podcast is in the video description, so do give them a follow. Emma bhai, any parting thoughts before we wrap up the show? आई थिंक मैं वही आप लोग से एक मैंने बात की थी कि जब से मैं क्रिकेट में काम कर रहा हूँ, यू नो इट्स हार्ड एंड हार्डर टू बी अ फैन, और आई थिंक कि बहुत सारी जो चीज़ें जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में पसंद होती थी, यू नो इट्स जस्ट हार्डर फॉर मी टू एक्सपीरियंस दोस। आई थिंक इट वाज सो नाइस आप चारों तीनों के साथ अभी ये शो करते हुए, जितनी आप लोग मेहनत कर रहे हो उसमें, जितना आप लोग एफर्ट कर रहे हो इन सेगमेंट्स को बनाने में,
आई थिंक कि मतलब मैंने टीवी चैनलों के साथ काम किया है और वहाँ पे भी हम लोग को इतना जो जिस लेवल पे हम कर सकते हैं वो लोग नहीं सोच रहे होते। आप लोग यूट्यूब पे कर रहे हो एंड दिस इज द एफर्ट यू पुटिंग इन। आई इट्स वन ऑफ द इट्स मेड मी सो हैप्पी। I think Means a it's lot. so exciting, or I wish you guys the best. I think just it's so romantic also that Pakistan cricket continues to inspire people like yourselves. और I think कि जिस तरीके से आप लोग ये मेहनत कर रहे हो, whatever you guys end up doing, it'll speak really well for it because you know the one thing that really helps you throughout life, talent, falana dimka apni taraf hai, it's always hard work. And I'm really, really impressed by all of this. So मैं आप लोग के लिए, I wish you all the best. तो इसलिए please audience like, subscribe और comment करना ना भूलिएगा. खुदा हाफिज. Allah Hafiz. Thank you so much.